Communication. Communication is your ticket to success if you pay attention and learn to do it effectively. Good communication is the bridge between confusion and clarity. It helps to create the strong relationship. Good morning, students. I, on behalf of the Department of English, welcome you all for this second day session on Advanced Diploma course in Communication Skills and Personality Development. Respected Principal of Shri Binzani City College, Dr. Maitre Sir, the Head of the Department of English, Dr. A.M. Shinde, the guest of our today's session, Ms. Harsha Borghare, the organizing team members, respected teachers and dear students. I welcome you all for this second day session on the importance of communication in group discussion. As you know, we shall take this session for an hour and then we shall post the videos related to our today's session, quiz and the experimental assessments, as well as you have to complete this assignment as far as possible, and we shall take the live doubt solving session also, as well as the assessment sessions. After this session you have to update daily, and with this quiz assignments and feedback of the resource person, if you have any queries you can ask us. Today we have Miss Harsha Borghare ma'am from our college to deliver her talk on the importance of communication in group discussion. She is an Master of Art in English, has qualified SAID and BEd. She also has published her research paper and has been the resource person for COC programs. Good morning, ma'am. I welcome you for this today's session. Now I request to Ms. Harsha Borghare ma'am to begin the session. Hello. Thank you, ma'am, for giving me such an honor. Okay, before start my lecture, let me introduce. It's not needed. Madam already have introduced me. Okay, so I'm going to engage today's lecture, which is based on the importance of communication in group discussion. I would like to express my gratitude to the organizing team, principal of the college, Dr. Sujit Maitre sir, HOD of department, Dr. Anil Shende sir, IQC coordinator, Dr. Kane ma'am, and Dr. Raktate sir, respected teachers. Thank you for giving me such a golden opportunity. So students, let's start. Okay, so today's the topic of my lecture is important of communication in group discussion. Okay, when we utter this word communication, we know that we use this communication in our day-to-day life. Okay, so we have the importance of communication in our life, and communication is the gift by God to the mankind. One minute, everyone. No, please. Okay. Okay, sorry for little disturbance. Okay, so importance of communication. I told you that this communication is the gift by the God to the mankind, and that Almighty has bestowed this gift to the man.
Okay, this is a art, this is a skill, and this is a everything in our life. Okay, and from the morning to the morning to the night, we use this communication in our life. So I'm just focus on this group discussion. Okay, see, but before that we should know what is communication, what is the meaning of communication. See this definition: communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Okay, so this is a process. Communication is the process of passing, means that information passing from one person to another. So this is a process of passing information and understanding from one person to another. Then the person whom this information is passing, that person understand that communication by his own mind or by his capacity, by his ability, and at the same time this process become successful. Okay, after means after the understanding of that person. Okay, so this is the definition by Keith Davis, that communication is the process of passing information and understanding from one person to another. Then see, being able to communicate effectively is one of the most important life skill to learn communication. Okay, this is one of the life, means this is the skill, this is the art, I told you that. And this is defined as transforming information to produce greater understanding. Okay, so having strong communication skills aids in the aspects of life, from professional life to personal life. We use this communication from professional life to personal life and everything that falls in between. Okay, so see the next slide. There are two types of communication. Okay, first we saw the definition of communication, and now see the types of communication. There are two types of communication. First one is verbal communication and the next one is non-verbal communication. Okay, and we know that human being is a social animal. Okay, he is called as a social animal, and that person, that man or anyone means can't survive without sharing the ideas, without sharing the views, without sharing the suggestions, thoughts and feelings. Okay, see, just imagine that कि किसी ने तो भी आपको अगर एक दिन के लिए भी आपको एक रूम में बंद करके रखा, without any communication, without any contact to others, so what happened? So just imagine that. Okay, so I'm called that human being is a social animal. Okay, without society he couldn't survive. Okay, then see, I told you that there are two types of communication. The first one is verbal communication. Verbal communication means what? Oral communication. Okay, verbal means जो हमें सुनाई देता है, that is verbal communication. So verbal communication is the use of words to share information with other people. Okay, it includes both spoken and written communication. Okay, means whatever we speak, whatever we just try to write down, it includes in this verbal communication. Verbal means क्या, जिसका हम बात करते हैं या हम जहाँ पर हम बोलने की कोशिश करते हैं या बोलते हैं, तो that is called as verbal communication. Okay, and it includes spoken as well as the written communication. Okay, then see the next one, non-verbal communication. Okay, I'm just giving you the brief summary of that because you should know what is the communication and what is the importance of communication in group discussion. Okay, then see non-verbal communication. Non-verbal communication means what? कि जहां पे verbal नहीं आता, means we not talk in this communication. Okay, so see, non-verbal communication is the communication other than oral and written, such as body language, postures, tone of voice or facial expressions. Okay, so your facial expressions are included here, your tone of voice means pitch of sound. See, and then your postures means your body postures, कि आपके body का posture कैसा है, that is, and your body language. Okay, see, without telling anything, without saying anything, your body says everything. Okay, means we just gaze the person by his appearance. Okay, and after when we talk we just gaze the another things, but when we
see that person, we just guess that what type of person he is. Okay, so non-verbal communication is the communication other than oral and written, such as body language, postures, tone of voice, or facial expressions. Okay, so I'm not defined this in vast. Okay, so I'm just giving you the brief summary of this. Then see, communication is the process. Okay, and in this communication, the main elements of communication are sender, encoding, message, decoding, receiver, and feedback. Okay, these are the elements of communication. The first one is sender. Sender is the person who initiates the communication. Okay, means he starts the communication. So he is one of the most important person in this communication process. Then encoding. Encoding यानी क्या होता है कि encoding यानी means कि जो भी सेंडर सोचता है, जो भी उसको मैसेज फॉरवर्ड करना है, उसको क्या करता है, वो स्ट्रक्चर में लाता है. ओके, सो इन द प्रोसेस द ऑफ एनकोडिंग, द सेंडर जस्ट एनकोड्स द मैसेज इनटू वर्ड्स एंड सिंबल्स. Okay, the sender selects relevant symbols and arrange them. Okay, if you want to convey some message to your friends or other person, you just try to think that message, and after that you just try to we can say manage the message or give this message in the one framework. Okay, so that is called encoding, कि हम उसको एक फ्रेमवर्क देता है. जैसे आपको अगर किसी को बर्थडे का मैसेज देना है, आपके बर्थडे का मैसेज देना है, तो आप क्या करते हैं, पहले तो सोचते हैं कि मुझे मैसेज क्या देना है. आफ्टर दैट यू जस्ट एनकोड दैट मैसेज, मीन्स उसके लिए आप वर्ड्स यूज करते हैं, उसके लिए आप सिंबल्स यूज करते हैं, उसके लिए आप जो कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ आपको लगता है कि दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर कन्वे दिस मैसेज, सो यू जस्ट चूज that symbols, that words, that language, whatever. Okay, so this is called encoding. Okay, so this is encoding. Then see the message is the soul of this, we can say, this communication. कि message क्या है. Okay, so message is the soul of this communication, and this is something called message. A message is well, we can say that a sender, it depends on sender that he well knitted that message and convey the message to the receiver. Okay, after that, first I told you that sender means who begins the message. See here in this platform, I am a sender. Okay, मैं क्या हूँ, सेंडर हूँ, और मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक मैसेज दे रही हूँ. आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रुप डिस्कशन. ओके, एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन कम्युनिकेशन. ओके, सो सी आई एम अ सेंडर, कि मैं सेंडर हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, एंड देन आई एम in encoding that message in a particular language which is familiar to you. आपको जो लैंग्वेज फैमिलियर है, आप उससे फैमिलियर है, आई एम जस्ट कन्वे दैट मैसेज इन that language, and I'm use this PPT for as a symbol. We can say yes, as a symbol, I'm just use this PPT, and I'm just convey this message through this PPT. Okay, so this is the medium. We can also say the medium of the message. Okay, so message is that I should give the information about the group discussion to you. Okay, then decoding means what? Decoding means this is, we can say, the reverse of this encoding. कि decoding का क्या होता है, this is the reverse of encoding done by sender, but decoding done by receiver. Okay, the receiver converts the words of symbols into intelligible ideas and thoughts contained in the message. Okay, he just means as per his ability or as per his intellectualness, he use or try to understand that message. That is called decoding. Okay, so it depends on the receiver's ability, his culture, his surrounding. Okay, and his intellectualness also. तो उसके कल्चर के हिसाब से, उसके इंटेलेक्चुअलनेस के हिसाब से, ही जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैसेज, एंड आफ्टर दैट रिसीवर try to give reply. That is called feedback. Okay, this is feedback. Okay, see at the upper of this
diagram, we see the feedback. Okay, so receiver gives the feedback, but here this process is not completed. Okay, see, after when that feedback is means reach to the sender, that process will be complete. Okay, that process will be completed. But if, see, I'm give the example of our lecture that I'm a sender and I'm encoding that messages and I'm just try to convey this message to you, then you are a receiver and you decodes that message as per your ability, and you will give the feedback as the feedback form कि आपको मैडम का लेक्चर समझा नहीं समझा, अच्छा था बुरा था, whatever will be, you just give that feedback, and due to that feedback, when that feedback will come to me, I will realize or I will understand that how was my lecture. Okay, so see, but here is some noise or some interruption, so what will happen, that message will not convey to you. अगर कोई नॉइस हो रहा है, कोई इंटरप्शन हो रहा है या किसी का माइक ऑन है, तो क्या हो जाएगा, ये मैसेज आपके पास अच्छे से नहीं पहुंचेगा, अच्छे से रीच नहीं होगा. So this is the process of communication. Okay, and as a human being we should know this process. सिर्फ कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट से बीसीसीए के है या बीबीए के है, उनको ही सिर्फ कम्युनिकेशन प्रोसेस पता होनी चाहिए. दिस इज नॉट important. Everyone should know about this. Everyone should know this communication process. Okay, I hope you understand. Then see, group communication. Group communication means what? Okay, so group communication refers to the regular regular discussion among a group of people. Okay, group discussion and group communication means what? This is the discussion among the group of people who communicate to achieve the goal. Okay, so they just decided one goal there, they just decided one aim there, and after that they just try to discuss. Okay, it is also known as group discussion. So group members discuss completing an independent and interdependent. Independent means they are free for the communication, and interdependence means they are just try to solve or try to discuss that matter in with the mutual understanding. Okay, so they the group members discuss completing an independent and interdependent goal. The interdependent goal is a mutual goal in which many people work together to achieve the same purpose. Okay, so on the other hand, the independent plan refers to one person's dream. Okay, and group discussion occurs when a group of people communicates regularly to the complete group task. See, I can handle. Okay, so group discussion is a group discussion. Here in this group discussion, the 7 or 8 people or more than 2 people comes and they just discussed about any topic. Okay, topic will be maybe it's formal or informal. Okay, formal भी topic रह सकता है और informal भी topic रह सकता है. कि हम देखते हैं कि जैसे अगर हम एक एरिया में रह रहे हैं तो एरिया के कुछ जेंट्स गैदर होते हैं और कुछ भी सोशल टॉपिक है या एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है या उनके एरिया का कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड टॉपिक है, तो दे जस्ट टॉक ऑन दैट टॉपिक, एंड दैट डिस्कशन मीन्स द आउटपुट ऑफ दैट डिस्कशन मे बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम. ओके, कोई भी प्रॉब्लम रहे, कोई भी रहे, तो वो डिस्कशन में ही क्या हो जाता है कि उसका सॉल्यूशन निकलता है. ओके, सो दिस इज द ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड ग्रुप कम्युनिकेशन आल्सो नोन एज अ ग्रुप डिस्कशन मींस जीडी. ओके, GD is very important. I will tell you about how it's important. The next slide. Okay, see the group discussion. Okay, this is the, we can also define as a definition of the group discussion.
Okay. See, the group discussion is a form of group communication in which the participants share ideas and exchange information on a common topic. Okay. So in the group discussion, the topic is common. ओके एक कॉमन टॉपिक दिया हुआ रहता है और उसके ऊपर उनको क्या करना पड़ता है, ग्रुप डिस्कशन करना पड़ता है, जीडी जो बोलते हैं हम कि वो रहता है, ठीक है। सो ग्रुप डिस्कशन इज अ फॉर्म ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. Okay, this is the form of group communication in which participants come together and they just share their ideas, they just exchange their information each other. Okay, and group discussion is a modern method of ideas and opinions take place. Okay, this is a modern method and this method is used each and every organization, institutes or everywhere we see. Okay, जब कभी आप आपके इंटरव्यूज में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आफ्टर रिटन एग्जाम, आफ्टर एनी एग्जाम, you will means you will have to face this group discussion in your life. Okay, so this is very important and this topic is discussed by a group कि वो 7-8 लोगों का ग्रुप रहता है जो कि सिलेक्टेड पर्सन है आफ्टर इंटरव्यू. ओके, तो उनको एक टॉपिक दिया जाता है. टॉपिक में भी एनीथिंग मींस इट्स डिसाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. Okay, and they just give that topic and you have to discuss on that topic. Okay, then see prerequisite of group discussion. Okay, so what is required for this group discussion, what is necessary for this group discussion? See, nowadays group discussion is being used along with personal interviews and written exam for the final selection of applicants. Okay, and it plays a key role in selecting the best among the best. Okay, through this group discussion, that organization, that institutes, they just try to find out the candidates who is best of the best. Okay, so for this group discussion, what is needed? You have to extensive knowledge base related to the state, country and globe. ओके कि आपको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यू हैव टू मींस वास्ट नॉलेज अबाउट योर स्टेट, कंट्री एंड ग्लोब आल्सो, कि आपको क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए फॉर द ग्रुप डिस्कशन. और ये कहाँ से मिलेगा? फॉर कहाँ से मिलेगा? बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बाय रीडिंग बुक्स, बाय रीडिंग मींस वी कैन से बाय वाचिंग videos, okay, related to that topic. Okay, so you will get the information through these means. Okay, so you have to extensive knowledge base related to state, country and globe. Okay, and you have also you have also have the information about the areas or our politics, sports, science and trade, commerce, industry, commerce, industry and technology, MNC, etc. Okay, means you should have the knowledge about these things also. Okay, कि जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्या चल रहा है, आप अभी आप तो क्या करेंगे, इंडिया के बारे में पहले तो हम इंडिया की सोचेंगे, पहले तो महाराष्ट्र में देखेंगे क्या हो रहा है, उसके बाद इंडिया में देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या चल रहा है. एंड स्पोर्ट्स ऑल्सो, किसको गोल्ड मेडल मिला, किसको क्या मिला. अभी से आपको इसका प्रिपरेशन करना है. अभी से एक कॉपी बनाओ, एक डायरी बनाओ और उसमें ये जो पॉइंट्स रहते हैं कि स्पोर्ट्स में किसको कब गोल्ड मेडल मिला, ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल मिले, इंडिया को कितने मिले, अमेरिका को कितने मिले, इसको कितने, उसको कितने, ये सब जो रहता है यू हैव टू जस्ट कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इन योर डायरी. ओके, एंड यू शुड नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइंस, कि साइंस कितना डेवलप हो रहा है, साइंस में और क्या क्या इन्वेंशंस हो रहे हैं. देन ट्रेड कॉमर्स, ट्रेड कॉमर्स मीन्स रिलेटेड टू दैट बिजनेस, इंडस्ट्री कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, MNC ऑल्सो. ओके, मीन्स जब कभी आप ग्रुप डिस्कशन आपके लाइफ में फेस करेंगे तो आपको इतना जो डिफिकल्टी जो रहती है वो आपको नहीं होगी. ठीक है, मीन्स इट बिकम्स इजी टू यू. सो अभी से आप न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, मराठी और हिंदी, जो भी आपको कन्वीनियंट लैंग्वेज है उसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ो और उसके जो पॉइंट्स है वो निकाल के आप एक डायरी में उसको एसिमुलेट करके आप उसको रखो.
Okay, then C, analyze the social and economical issues logistically. Okay, जो जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे कि अभी जो कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना की वजह से कितने सोशल इश्यूज क्रिएट हुए हैं, कितना इकोनॉमिकल इश्यूज क्रिएट हुए हैं. यू शुड नो अबाउट द मीन्स इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिकली मीन्स करेक्टली. ओके, कि आपको बहुत ज्यादा अच्छे से इसकी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, कि बस गेसिंग कर लिया, it's not important. Okay, so you should know, you should have the information about this. Then cooperation. Okay, so ग्रुप डिस्कशन के लिए कोऑपरेशन जो रहता है, कोऑपरेशन वो बहुत जरूरी रहता है. मींस आप एक में को कोऑपरेट करते हैं. ओके, सो इससे क्या होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजर है या इंस्टीट्यूट ने जिसने भी आपको ग्रुप डिस्कशन दिया है, एक टॉपिक दिया है, तो दे जस्ट जज यू कि आपका नेचर कैसा है. ग्रुप डिस्कशन यानी वो देखते हैं कि आपका नेचर क्या है, आप एक एज ए पर्सनालिटी आप कैसे है. क्योंकि रिटर्न तो आपने क्वालिफाई कर ली, बट एज ए पर्सन हाउ यू आर. ओके, सो दे जस्ट वांट टू सी ऑल दिस थिंग्स. देन सी हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ जीडी. अगर आप किसी इंटरव्यू में पास हो गए, इंटरव्यू में आप सिलेक्शन हो गया, आफ्टर दैट उन्होंने आपको जीडी दे दिया, तो आपको क्या करना है कि इसका एक पार्ट बनते समय आपको ये जो थिंग्स जो भी मैं बताने वाली हूँ पॉइंट्स, वो आपको रिमेम्बर करना है और वो आपको आपके जीडी में इसको आपको फॉलो करना है. ओके, सो सी फर्स्ट, keep eye contact while speaking. Okay, I'm talking here about formal and informal group discussion also. Formal means what, कि आपको जब आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है उसके बाद का जो ग्रुप डिस्कशन रहता है वो हो गया फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन. एंड इनफॉर्मल मीन्स व्हेन, जब आप आपके रिलेटिव्स में, जब आपके आपके फ्रेंड्स में आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं एट द टाइम. ओके, सो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ द थिंग्स. ओके, हियर देन सी कीप आई contact while speaking. Okay, the first point is that keep eye contact while speaking. We know that eye is the window of soul. ओके, जब भी आप किसी के आंखों में झांकते हैं तो आपको एक उसका जो सोल रहता है, उसकी आत्मा रहती है कि उसको उसका नेचर क्या है, उसका माइंड कैसा है, इसका आपको कहीं ना कहीं 80% तो भी आपको अंदाजा आ जाता है कि हाउ दिस पर्सन इज. ओके, सो कीप आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग. ओके, जब भी आप स्पीकिंग करते हैं, जब भी आप या इंटरव्यू भी जब आप फेस करते हैं, तो आपको सभी के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. एक ही पर्सन की तरफ आपने अगर क्या बोलेंगे कि एक ही पर्सन की तरफ देखकर अगर आपने जीडी किया या ग्रुप डिस्कशन किया, तो वो पर्सन को क्या हो जाएगा, इरिटेट लगेगा कि ये मेरे ही तरफ देख के क्यों बात कर रहा है. सो यू शुड हैव टू मेंटेन दिस आई कांटेक्ट विथ ईच एंड एवरीवन. ओके, देन इनिशिएट द जीडी. अगर आप ग्रुप डिस्कशन में इनिशिएटर बनते हैं कि आपने ग्रुप डिस्कशन में उन्होंने टॉपिक दिया और आपने जल्दी से वो टॉपिक को फॉलो करके वॉट एवर द पॉइंट्स इन दैट टॉपिक, यू जस्ट फॉलो दैट, यू जस्ट रिमेंबर दैट एंड यू जस्ट फर्स्ट पर्सन टू इनिशिएट दैट जीडी. सो इट शोज योर लीडरशिप कि आप एक एज ए लीडर आप कैसे हैं. ओके, सो ये हमेशा याद रखना कि आपको जब भी आप ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व है तो आपको पहले ही उसको स्टार्ट करना है, लेकिन उसके लिए अपना नॉलेज, अपना प्री नॉलेज और अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर है कि नहीं, ये पहले आप चेक कर लेना. नहीं तो स्टार्ट तो कर दिया बट वी डोंट नो व्हाट इज द टॉपिक, ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो यू शुड अवेयर अबाउट दिस. देन अलाउ अदर्स टू स्पीक. सिर्फ आप ही वो ग्रुप डिस्कशन में बात कर रहे हैं और बाकी को आप चांस ही नहीं दे रहे हैं, तो इट्स नॉट गुड. ओके, सो अलाउ अदर्स टू स्पीक and speak clearly. Whatever you are speaking, you just speak clearly. Okay, if I'm just speaking here ambiguously and you can't hear my voice and you can't hear my words, so what happened? Okay, you can imagine what happened. Okay, so see, speak clearly. This is very important in our life that we speak clearly and our pronunciation is we can say that clear. Okay, make sure to bring the discussion on track. ग्रुप डिस्कशन, वी सी ग्रुप डिस्कशन में अगर एक टॉपिक शुरू है तो हम देखते हैं कि ये टॉपिक जो रहता है वो ट्रैक बदल लेता है. यानी आपने ग्रुप डिस्कशन शुरू किया कि जैसे बोलेंगे कि
क्या बोलेंगे कि जैसे कोरोना के बारे में अगर आपने बोल दिया कि कोरोना इज दिस दैट, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ कोरोना, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कोरोना, एंड व्हाट आर द वी कैन से इम्पैक्ट्स ऑफ कोरोना, जो कुछ है आपने अगर बोल दिया, लेकिन उसको बोलते बोलते आकर अगर आप एकदम से एजुकेशन की तरफ आ गए कि एजुकेशन सेक्टर की तरफ आ गए कि इसमें कितना इश्यू चल रहा है, तो दिस विल just we can say change your track. Okay, so it should not happen or in the group discussion, so be careful about this कि हमें ट्रैक नहीं बदलना है, हमें जल्दी से क्या करना है उसी एक ही ट्रैक की तरफ, जब तक उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता और जब तक हमारा ग्रुप डिस्कशन वो टॉपिक पे नहीं होता, तो यू शुड अवेयर अबाउट दैट. देन पॉजिटिव एटीट्यूड, जो कुछ भी है, जो भी इश्यूज है उनको आपको पॉजिटिवली लेना है. अगर हम देखें कि कोरोना का यानी जो भी एग्जांपल है, व्हाई आई एम गिविंग हियर बिकॉज दिस इज द करंट इश्यू. ओके, कि कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम इकोनॉमिकली स्ट्रेस हुए और एजुकेशन का इतना लॉस हुआ, ऑल दीज थिंग्स. ओके, वी नो एंड वी एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स, बट हम ये भी देखेंगे कि उसका अच्छा परिणाम क्या हुआ, कि लोगों में जो बोलेंगे कि क्लीनलीनेस जो है उसका अवेयरनेस कितना बढ़ा. उसके बाद हमने जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको अच्छे से कितना सीखा, उसके बाद हमने जो लेक्चर्स है उसको कितने अच्छे से हमने जो भी लेक्चर्स डिलीवर्ड किए वो कितने अच्छे से किए. सो वी शुड see the positive aspects of that topic. Okay, so this is very important in group discussion if you want to become the part of group discussion. Okay, then see the next slide is accept criticism. Okay, ऐसे बहुत बार होता है कि आपको अभी मुझे पता नहीं कि यू आर इन्वॉल्व इन फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन और नॉट, लेकिन जब भी आप इनफॉर्मल में भी आप देखो कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक टॉपिक रहता है और हम अगर अपना ओपिनियन वो टॉपिक पे देते हैं, तो बाकी के लोग आपके अगर फ्रेंड्स है या घर के मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, तो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि हाँ ऐसा होता है क्या, कभी ऐसे वगैरह बोलते हैं. सो एट द टाइम if any member of the group criticizes or disapproves a point, it is unwise to get upset or react sharply. Okay, आपको वही के वही sharply आपको react नहीं करना है. You should just we can say silent there and try to calm down. Okay, आपको वही पे रिएक्ट नहीं करना है. आपको जो भी आपका टॉपिक है वो आपको क्या करना है, एक प्रॉपर वे में आपको उनको समझाना है कि हाउ आई एम करेक्ट हियर. Okay, so if any member of the group criticizes or disapproves a point, it is unwise to get upset or react sharply. Okay, then see, in any case the criticism is flimsy. Okay, अगर criticism है जो हो flimsy है, flimsy means not strong. Okay, the same can be pointed out politely. अगर किसी ने क्रिटिसिज्म किया आपके ऊपर, क्रिटिसाइज किया, आपको कुछ भी बोल दिया, बट जो उनका क्रिटिसिज्म है इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, बट यू हैव टू मीन्स यू हैव टू फॉलो द सेम स्ट्रेटेजी फॉर योर टॉपिक. ओके, और फॉर द ग्रुप डिस्कशन. सो आपको वहां पे शार्पली रिएक्ट नहीं करना है और अपसेट तो होना ही नहीं है. आपको एकदम अच्छे से उनको आपकी जो टॉपिक है, आपकी जो बात है वो समझा के देनी है कि हाउ आई एम राइट हियर. ओके, देन सी शो लीडरशिप एबिलिटी. A group discussion evaluate your leadership qualities. I told you about this. Okay, you have to show your leadership there. If you are become the initiator of that group discussion, it shows your leadership. Then accept someone's point of view, praise the argument. Okay, you have to accept the others point of view also, other members point of view also, and their praise and their argument also. हमें क्या करना है, ये सब चीजें हमें एक्सेप्ट करना है. हमें जो भी क्रिटिसिज्म होता है ये एक्सेप्ट करना है. और उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, उसके लिए आप क्या करेंगे, खुद को वहां पे शांत रखेंगे एंड एकदम पोलाइटली विद द मॉडेस्टी यू हैव टू पुट योर टॉपिक और you have to put your points in front of that people or in front of that group members. Okay, so this is very important. Then see important points in group discussion. Be assertive. You should have assertive. Assertive means क्या होता है,
हम assertive sentence देखते हैं. Assertive means positive, means not negative. So an assertive person is direct, honest, careful about not hurting others, self-respect. Okay, if the topic is like God existence or not. So इसमें ऐसा हो सकता है कि आप अपने ही व्यूज बताएंगे, अपने ही पॉइंट्स बताएंगे कि गॉड है कि नहीं है, बट आपको क्या करना है, यहाँ पे ये देखना है कि आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे, किसी के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं करेंगे. और ये ऐसे जो टॉपिक रहते हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, इसमें ये होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि यू जस्ट हर्ट टू अदर्स. Okay, so you should be aware about that. Then patient listener, listening is the skill, we know that. So you should means listen all the things which conveyed all the message or all the topics or all the points which conveyed by the that member. You should listen that points very patiently. Okay, so listening to the another person is one way of showing appreciation, means through that you show your appreciation. Then right language. Okay, so through GD, you try to analyze given topic, and GD there are some topics like controversial topics, or we can say or abstract topics, or factual topics. Okay, but when you go through the group discussion, you should be very aware about your language also, because we know that the tongue has no bones but is strong enough to break a heart. So be careful with your words. ओके, जो हमारी टंग रहती है ये छोटी सी रहती है, लेकिन ये क्या करती है, बड़े बड़े के हार्ट्स को ब्रेक करती है. यानी जो भी हमारे पास के जो भी या आपके फ्रेंड्स रहेंगे उनके हार्ट को भी ये क्या कर सकती है, ब्रेक कर सकती है. सो बी अलर्ट अबाउट दैट एंड यू शुड यूज राइट एंड प्रॉपर लैंग्वेज. Be analytical and fact oriented. Okay, so it is necessary to make relevant points which can be supported with facts and analyzed logically. Okay, so whatever the points you just put there, you should, that points should be related to the facts. And in group discussion you just analyze that topic logically. Okay, if the topic is like factual topics like the educational policy of India. Okay, अगर ऐसा टॉपिक आता है कि एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, so you should know the relevant information about that. Okay, so if I'm talking about the education policy, I should know, means I miss me, and I can also say you should know the real factors related to the topic. Like the policy covers elementary education to higher education in both rural and urban India. Then the first education policy was established by our Prime Minister of India, Indira Gandhi, in 1968. You should know that year also, 1968. It just impressed that person, it just impressed that institute, that organization. Then the second policy was established by Rajiv Gandhi in 1986. The third policy was by Narendra Modi in 2000 in 2020. Okay, so you should know the real facts related to that topic. ओके अगर फैक्चुअल टॉपिक से तो ये सब आएगा. अगर एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक मींस लाइक एब्स्ट्रैक्ट यानी क्या होता है कि जो हमें दिखता नहीं है, द लाइक लव, एंगर, अल्फाबेट्स. मीन्स अगर मैंने कहूंगी कि ए इज एन अल्फाबेट, अगर आपको इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन करना है तो आप क्या करेंगे, कुछ भी आप बता सकते हैं. मीन्स इट डिपेंड्स ऑन योर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, and like a controversial topic like reservation should be removed. Okay, that topic. So in that topic it's not needed that you should know all these things, but the topics like fact oriented or topics like factual topics, you should know the real information, or we should know the facts related to that topic. Okay, then see, I couldn't see. Okay, then see the advantages of the communication. Okay, so
Group communication is a good source of strengthening the previous knowledge and learning of an individual. Okay, so through the group discussion, you just strengthen, you just make your you just make the strong make strong your previous knowledge. कि आपका previous knowledge क्या है, इसको आप लेके अगर न्यू आप रीड करते हैं, न्यू अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इट जस्ट स्ट्रेंथन योर नॉलेज एंड लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, किसी को आप जानते हैं, किसी का आपको पर्सनालिटी पता चलती है, आप वो जो इंडिविजुअल पर्सन है उसको आप क्या कहते हैं कि उससे फैमिलियर होते हैं. ठीक है, सो ऑल ग्रुप मेंबर्स फील दैट दे आर an integral part of the group. Okay, hence the sense of positivity creeps in. Okay, all group members feels that you are an integral part of the group. Okay, जो group members है उनको ये feel होना चाहिए, उनको feel होता है कि you are the part of that group. Hence the sense of positivity creeps in. और इससे क्या होता है कि जो positivity है वो आपके mind में automatically आती है. Okay, and it motivates the participants to think over the particular issue and freely express their views and ideas about it. Okay, that group discussion, what is the advantage of group discussion? That it motivates the participant to think over the particular issue. जो भी issue है, like any issue, social issue, economical issue, education related issues. Okay, so they just think on that. Okay, सुबह तो फोन ही नहीं किया यार तूने. And freely express their views and ideas about it. Okay, they are free. इतना सुबह तो मैं उठता नहीं हूँ. They are free. मैं तो 5 साढ़े 5 बजे उठा था, बहुत हवा चल रही थी, साला बारिश हो रही थी. They are free to express their opinion. They are free to give their we can say that their information. So in group discussion, this is the advantage of group discussion, that you are free to express your views, you are free to express your ideas, you are free to exchange your views to other person. Okay, so this is the advantage of group discussion. Then see the last one. Okay, so I'm just quoting here one thing. Okay, so this is the we can say that coming together is a beginning, and keeping together is a progress, and watching together is a success, by Henry Ford. Okay, so this is a quote by Henry Ford, that coming together is a beginning. If you are coming together, this is the beginning, and keeping together is a progress. If you are working together, if you are doing teamwork, this is the progress, and working together is a success. And when you will working together in any organization, any institute, it will definitely gives you success. Okay, this is by Henry Ford. And thank you everyone for your patience. You just patiently listen me. Okay, now thank you so much, ma'am, and thank you everyone. Okay, so this is my today's lecture. If you have any queries, you can ask me. Thank you so much, ma'am. Students, I hope you would understand very well that communication is an act of sharing and exchanging information, ideas, and feelings, as well as the thoughts. A relationship with a lack of communication won't work. And it is the biggest problem of communication that we do not listen to understand. We actually listen to reply. So आंतरिक भावस्पंदनांना समजून घेणे म्हणजे जगणे आणि जिंकणे सुद्धा. कारण या जगात राहणे सोपे आहे, पण एखाद्याच्या हृदयात राहणे मात्र अवघड. या विश्वाच्या हृदयात प्रवेश करण्याची खरी प्रक्रिया सुरू होते ती संवादाने. आणि हा संवाद जर का तुम्हाला जमला तर तुम्ही जिंकलात असं समजा. Thank you so much, ma'am, for giving your valuable time from your busy schedule to grace this meeting.
You made this session truly wonderful for us. It will help our student to be able in a good communication skills. Once again, I thank you, ma'am. Now, I would like to call Shubhangi Suryavanshi from BA English Part 2, from MA English Part 2 to propose the vote of thanks. Thank you so much, ma'am. A very good morning to all. It's given me an immense pleasure to propose the vote of thanks on behalf of MA English of our college. Firstly, I would like to thank our principal, Dr. Sujit Maitre, sir. Thank you, sir, for conducting such an important and beneficial career-oriented courses for us. Thank you, sir. Then I would like to thank our today's resource person, Harsha Borgade, ma'am. Thank you, ma'am, for delivering the verbal communication and non-verbal communications skills importance to us. And the group discussion, importance of communication in group discussions. We are very thankful to you, ma'am. Then I would like to thank our department's HOD, Dr. Anil Shande, sir, and along with Pranjali Kane, ma'am, coordinator of IQSC of department. Thank you so much, ma'am. And last but not the least, my sincere listeners for listening sincerely. Thank you all present here and everyone. Thank you so much, ma'am.